नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आज टॉपिक हूँ आमर इकोलोजी। तो देखा इकोलोजी आम कौन कौन पढ़ा से देखा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कहले आम कौन बुझा से आग जानवे तापर आम देन इकोसिस्टम टाइप्स एगुड़ाक सब आम पढ़ा। तो फास्ट हूँ एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज ए कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन concurrence with non-living component interacting with each other। इकोसिस्टम कहवाक गले आमर कम्युनिटी सहित आमर नॉन लिविंग सब्सटेंस जो मैंने भी प्रेजेंट रही एनवायरमेंट रे तांको भीतर गोटे इंटरैक्शन को आम कौन कहवा इकोसिस्टम। तो देखिए आम नेक्स्ट पेज। व्हाट इज एन इकोसिस्टम। फास्ट हम देखिए इकोसिस्टम कहले कौन बुझे डेफिनेशन इकोसिस्टम सारा। एन इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मो प्रीवियस रे जहाँ कहली सेटा ही लिखी। एन इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। जदि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकोलॉजी आम जब पढ़ा तो फास्ट तार यूनिट हूँ इकोसिस्टम। आ इकोसिस्टम कहवाक गले आमर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मैंने तुम देखुच बायोटिक। तो बायोटिक को अदरवाइज कहुए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ता सहित तार एनवायरनमेंट सहित बा सराउंडिंग सहित जो इंटरैक्शनटा आसे तो सेटा को आम कौन पढ़ा इकोसिस्टम। इन अदर वर्ड्स एन इकोसिस्टम इज ए चेन ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट देखिए द टर्म इकोसिस्टम coined by A.G. Tansley। এটা very very important। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाई कि इकोसिस्टम coined by which scientist। तो सेटा आंसर हो A.G. Tansley एंड इंग्लिश बॉटनिस्ट। ओके देन नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। आम स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम में कौन पढ़ा। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। This includes the distribution of energy in our environment. It also includes the climatic condition prevailing in that particular environment। The structure of ecosystem कहबाक गले आमर both biotic and non-biotic बा abiotic। ठीक अच्छे। तो both biotic and abiotic। biotic कहले कौन बुझा। biotic कहले आमे लिविंग सब्सटेंस को बुझेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मैंने भी रहिले। आ अबायोटिक कहले आमे नॉन लिविंग को बुझेगा बुझीपार। दिस इंक्लूड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन आवर एनवायरनमेंट। इट ऑल्सो इंक्लूड क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो कौन आम केते टाइप आमर इकोसिस्टम अच्छे से देखा। तो ये फास्ट हूँ बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट पेज देखा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन आम देखा केमी इकोसिस्टम क्लासिफाइड हो। So let's start। Ecosystem are of two types, that is the biotic and abiotic factor। Depend करुछ आमर biotic और abiotic factor। Then again abiotic रे गला कौन आमर abiotic रे जो सब नॉन लिविंग जमती कि आमर नवा abiotic रे तो नॉन लिविंग फैक्टर नवा टेम्परेचर हो कि प्रेशर हो आ कौन ह्यूमिडिटी है। तो दिस आर abiotic in nature। Understand? And another is the biotic factor, that is the producer, consumer and decomposer। Then again our consumers are again three types, that is the primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer। Some are quaternary consumers are also be present। that is the primary consumers example आम कौन ना हर्बिवोर्स जोटा कि आम प्राइमरी कंज्यूमर कहूँ गले आम जोटा कंज्यूमर कौन जो प्रोड्यूस कंज्यूम करवा दैट इज द कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर आम किए गले कार्निवर्स एंड टर्शियरी गले। सेकेंडरी कार्निवर्स सेमती क्वाटरनरी गोटे अच्छी क्वाटरनरी कंज्यूमर आमर जीव टर्शियरी कार्निवर्स। ओके नेक्स्ट आम पढ़ा बायोटिक कंपोनेंट। तो फास्ट मुझे जहाँ भी कही बायोटिक कंपोनेंट से सब ही लिखाई। तो बायोटिक कंपोनेंट रिफर टू ऑल लिविंग कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। बायोटिक कंपोनेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ एंड साप्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर्स। तो आम फास्ट देखा कि आमर बेसिक बायोटिक कंपोनेंट आर डिवाइड बा कैटेगराइज्ड थ्री टाइप, दैट इज ऑटोट्रॉफ
and heterotroph and saprotroph. Then what is the producer? Producer कहले आम कौन बुझा प्रीवियस आम देखिले ये सब देखिले प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर तो एगुड़ा आम एगेन तार क्लासिफिकेशन पढ़ा देन तार डिटेल्स पढ़ा देन हूँ प्रोड्यूसर. Producer कहले आमे producer include all autotrophs such as plants. They are called autotrophs as they can produce food through the process of photosynthesis. तो जो माने photosynthesis जेमती कि plants माने से माने कौन होचंदी photosynthesis से help द्वारा समाने निजर food निजे ही prepare करचंदी. तो there this is the group of producer. All other organism higher up the food chain really on a प्रोड्यूसर फॉर फूड आमर जिते ऑर्गेनिज्म भी अच्छी तो डिपेंड क्या भी कर प्रोड्यूसर उपर कर ग्रीन प्लांट उपर कर तो दिस इज ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करुचे देन कंज्यूमर जो मैंने कंज्यूम कर दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर्स. तो कंज्यूमर्स कौगुड़ा गले जमती कि प्रोड्यूसर आमर गले कौगुड़ाक ऑटोट्रॉफ माने गले सेमती कंज्यूमर आमर कौन जी हेट्रोट्रॉफ जी. तो हेट्रोट्रॉफ आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड. Consumers are further classified in primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. जो consumers depend करছে other organism for food that is the group of consumers or heterotrophs. Complete. Then next which primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. Consumers are three types that is the primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. तो first हम पढ़िबा primary consumer कौन बुझा are always herbivores and they really earn producer for food. तो प्राइमरी कंज्यूमर सब हर्बिवोर्स ही होती है से सब प्रोड्यूसर फूड उपर डिपेंड करते जमीक आम गोटे एग्जांपल नवा तो प्रोड्यूसर कि ग्रीन प्लांट रही आम बुझे तो कंज्यूमर माने कि रहिले जो माने ग्रीन प्लांट को ही तो टेक करते दिस इज योर प्राइमरी कंज्यूमर. तो से किए गले आम ग्रीन प्लांट गुड़ाक जो मैंने फूड आकार नियंती आम को ग्रुप ना प्राइमरी कंज्यूमर. तो सेकेंडरी कंज्यूमर जोटा कि प्राइमरी कंज्यूमर उपर डिपेंड करते दैट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर. दे कैन बी आइदर कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स जोटा कि कह तुम मांसाहारी आ गोटे कहते सर्वाहारी ओमनिवोर्स. And tertiary consumers are categorized are organisms that depend on secondary consumers for food. Tertiary consumers are also be carnivores or omnivore. तो carnivore और omnivore तुम्हें मे बी बहुत क्लीयरली तुम्हें जानी थी. तो नेक्स्ट हूँ क्वाटरनरी कंज्यूमर. Quaternary consumer present in some food chain. These organisms prey and tertiary consumer for energy. Furthermore, they are usually at the top of the food chain and they have no natural predator. तो यहाँ गला आमर क्वाटरनरी कंज्यूमर. नेक्स्ट देखिए आमर डिकम्पोजर कहले आम कौन बुझा डिकम्पोजर includes saprophytes such as fungi, bacteria. They directly thrive on the dead and decaying organic matter. Decomposers are essential for the ecosystem as they help in recycling nutrients to be reused by plant. That is the ergola decomposer. Decomposer को माने गले that is the bacteria. Sorry, that back गला. तो बैक्टेरिया माने गले फंजी माने गले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माने डिकम्पोज में हेल्प करते दैट इज द decomposers. And then again our abiotic component are non-living component on an ecosystem. It includes air, water, soil, minerals, sunlight, temperature, nutrients, and altitude and turbidity. So these are the abiotic factor. Then again next slide types of ecosystem. Ecosystem रो types कौन रोचे तो main types होची that is the two types of ecosystem that is the terrestrial and aquatic ecosystem. terrestrial कहले कौन बुझे तुम terrestrial कहले एटा बुझे कि land based ecosystem. तो जोटा को land रहिला this is your terrestrial ecosystem. There are different type of terrestrial ecosystem distributed around various geological zone. Different types of terrestrial ecosystem be also present. तो आमर ecosystem terrestrial ecosystem are again of different types. These are different types of terrestrial ecosystem that is the forest ecosystem, grassland ecosystem, tundra ecosystem and desert ecosystem. तो अगेन आम पढ़ा फॉरेस्ट इकोसिस्टम. फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहले कौन बुझे तुम फॉरेस्ट इकोसिस्टम तुम भी जानी पड़ो जोटि कि आमर पर्टिकुलर ट्रीज एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज द लिव इन कोऑर्डिनेशन मैनर विथ अबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट. तो एमान भितर आमर फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंक्लूड होची. फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड द मेजर ऑफ कार्बन सिंक. So this is your forest ecosystem. Next slide is the grassland ecosystem. In a grassland ecosystem, the vegetation is dominated by grasses and herbs. Temperate grassland and tropical or savanna grassland are example of grassland ecosystem. तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम रे कौन गला आमर ग्रास माने गले ग्रास हर्ब्स एगुड़ा सब आम ग्रासलैंड इकोसिस्टम गला. सेमती टंड्रा इकोसिस्टम आम देखा जोटि कि आमर
कोल्ड क्लाइमेट रे देखे जाए हर रेनफॉल इज स्कार्स मान बहुत कम रेनफॉल होता है दीज आर कवर्ड विथ स्नो और फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर जोटि कि आमर स्नो मोस्ट ऑफ द ईयर आमर प्रेजेंट है दिस इज योर टुंड्रा इकोसिस्टम देन लास्ट इज योर डेजर्ट इकोसिस्टम व्हाट इज डेजर्ट इकोसिस्टम तुम्हें तो नेम ही जानी पाथ डेजर्ट जो इकोसिस्टम आर डेजर्ट रे प्रेजेंट हो दैट इज योर डेजर्ट इकोसिस्टम दैट इज दे आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड तो से दिन मानक कौन हुए हॉट होता है आउ नाइट मानक से कोल्ड होता है दिस इज योर डेजर्ट इकोसिस्टम नेक्स्ट स्लाइड इज द aquatic ecosystem आम पढ़ले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम टाइप्स देन आम पढ़ा ए aquatic ecosystem देन aquatic ecosystem आर ऑफ डिफरेंट टाइप दैट इज द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मेराइन इकोसिस्टम तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में तुम जानते जो फ्रेश वाटर लिविंग कर जो इकोसिस्टम दैट इज द लेक्स पॉन्ड्स रिवर स्ट्रीम्स दैट इज वेटलैंड दीज आर द fresh water ecosystem there is no salt content in fresh water okay then होची हमर marine ecosystem तो जानी पड़थो that is the salty substances present in marine ecosystem or seas or ocean that is your under the group of marine ecosystem then next point next slide then last your conclusion that you what are the conclusion of ecosystem an ecosystem is a common term and is widely used in biology and environmental study तो फर्स्ट आम एनवायरमेंटल स्टडी बायोलोजी आम इकोसिस्टम को बहुत यूजिंग कर देन आम कौन पढ़ा इन जनरल इट इज नोन एज इकोसिस्टम system or community that consist of all living organism and their related non-living component in nature. All such components are directly or indirectly associated with each other to create ecological balance. तो ecological balance करया पे हमर कोन नॉन लिविंग और लिविंग भितर हमर कोन हुए एसोसिएटेड होता है तो सेटा को हमें इकोसिस्टम चैप्टर ही पढ़ले तो थैंक यू समस्त को तो जदि कहा को ये पीडीएफ दरकार अच्छी तो इन मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि पारे।